Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ए विषय पढ़िबा ऑलरेडी तुम प्लस टू रे या विषय पढ़ीच देख दुई जन साइंटिस्ट रदरफोर्ड एंड सोडी दे एक्चुअली स्टडीड दिस फेनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिविटी आउ तापरे केतेटा लॉज फॉर्मुलेशन करले जहाँ कहगला लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी बा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके सो फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी हूँ गोटे स्पॉन्टेनियस फेनोमेना बा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्वतःस्फूर्त एथिरे आमे देखा पाऊ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आउ आमे एठी प्रेडिक्ट करि परिबा नाही जे केतेबेले गोटे पार्टिकुलर एटम डिसइंटीग्रेट करिवो गोटे रेडियो एक्टिव सैंपल रो सेकेंड पॉइंट रे कहूची एटम्स ऑफ एवरी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर कॉन्स्टेंटली disintegrating or decaying into the new atom okay so एटी एमिशन हो पारे अल्फा किंबा बीटा रेज रो सो जो न्यू एटम टा बाहला ताको हमें डॉटर एटम बोली कहबा व्हिच में एमिट गामा रेज इफ लेफ्ट इन द एक्साइटेड स्टेट बाय एमिटिंग अल्फा और बीटा रेज तापर थर्ड पॉइंट रे कहूची द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक दैट ऑफ योर टेम्परेचर प्रेशर और केमिकल कॉम्बिनेशन एटसेट्रा कहा ऊपर डिपेंड करछि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ओके तापर 4 नंबर रे एबे हमें याकू इक्वेशन रे जदी फ्रेम करबा जदी गोटे अल्फा पार्टिकल रो एमिशन होउछि ताले जो नुआ एटम टा बाहरिबो इट विल हैव मास नंबर लेस बाय 4 यूनिट्स सिमिलरली एटॉमिक नंबर लेस बाय 2 यूनिट्स ऑफ दैट ऑफ योर पेरेंट एटम ताले इक्वेशन रे देखो एटा पेरेंट एटम थिला विथ मास नंबर ए एटॉमिक नंबर जेड ताले डॉटर एटम रे देखो मास नंबर कमी जाइछि 4 आउ एटॉमिक नंबर 2 कमी जाइछि सो दैट वी आर गेटिंग अ अल्फा पार्टिकल व्हिच इज अ डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस राइट तापर 5 नंबर रे एबे हमें देखिबा बीटा पार्टिकल रो एमिशन हेले कोन हबो एथिरे जो नुआ एटम बाहरिबो इट विल हैव एटॉमिक नंबर which is more than 1 unit and mass number ta will remain same as that of your parent atom then this is again our parent atom and here this is the daughter atom देखो mass number same अछि but atomic number गोटे बढ़ी जाइछि so that we are getting a beta particle which is nothing but a moving electron okay तापरे 6 नंबर रे the rate of disintegration এটা হচ্ছে সবুঠু ইম্পর্টেন্ট ল দ্য রেট অফ ডিসইন্টিগ্রেশন দ্যাট ইজ দ্য নম্বর অফ অ্যাটমস ডিসইন্টিগ্রেটিং বা ডিকেইং পার সেকেন্ড of a radioactive sample at any instant of time will be directly proportional to the number of atoms which are present at that instant माने जदि सपोज आमे dn कहूछु the small number of atoms which are disintegrating in a small time dt then n जदि हला number of atoms which are present at that instant of time which is suppose t right then dn by dt as per this sixth law should be proportional to n suppose एठी हमें गोटे proportionality constant आनिला which is lambda okay along with that we have put a negative sign here which is indicating that there is decrease in n with time okay time अनुसार n रो decrease होउची ओके जेते जेते टाइम बढ़ुची एन कमी कमी जाउची तेणु करी नेगेटिव सिंबल आ ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लैम्बडा याकू आमे कहबा डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ओके सो एबे ए इक्वेशन को आमे सॉल्व करबा को चेष्टा करबा ओके देखो dn by n equal to minus lambda dt एबे इंटीग्रेट करबा देन वी ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सपोज गुटे आसिला एठी k ओके सो एबे
এই গ্রাফ को आमे आसीबा ओके के होची जेमते कहली द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 नंबर ऑफ एटम्स सपोज आमे कहला n 0 ओके नाउ एट टाइम t नंबर ऑफ एटम्स हेगला कैपिटल n ओके ताले एठी एई सब वैल्यू जदि आमे पुट करिबा प्रथमे एट टाइम t इक्वल टू 0 ताले k रो वैल्यू आमे पाइला व्हिच इज log base e of n0 এই ভ্যালু को एबे आमे मूल इक्वेशन रे पुट करिबा एंड वी अगेन ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर सो फाइनल इक्वेशन हमर आसिला दिस वन n इक्वल टू n0 e to the power minus lambda t okay so this equation is actually giving us the number of radioactive atoms which are left after time small t okay आ एथरु जणा पडुचे ई इक्वेशन रु जे देखो e to the power minus रे अछि बा exponential of minus अछि so the radioactive decay is exponentially एटा decay करूची ओके सो एबे यार जदि हमें ग्राफ पुट करिबा ताले देखो एठी n0 जोटा कि स्टार्टिंग बा इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 थिला आउ एठी एक्सपोनेंशियली यार डिके हमें देखा को पाउछु एंड इट विल मीट द x axis where we have taken the time at infinity okay infinity रे एटा मीट करिवो okay so same jinso another graph which I have taken from another book and here pasted so एठी same jinso this is a very small segment जोटा कि हमें नौथला केते dn okay which is now in the time dt okay so a small segment को यूज करके हमें टोटल एटम रो जो डिसइंटीग्रेशन होची ताको हमें पाई परिबा by this graph and this is our decay curve okay अच्छा now this actually law जोटा कि हमें कहला radioactive decay law okay so एथिरु जणा पडुची from the above law that the disintegration is very fast rapid okay it is rapid in nature in the beginning okay starting रे बहुत ही जोर से बहुत fast decay हला and then it will be slowed down okay so as you can see in the figure एठी देखो starting रे बहुत शीघ्र एठी डाउनफॉल देखौची किंतु धीरे धीरे in the course of time it will be slowed down okay अच्छा ताले मने करा जाओ capital M0 be the initial mass of the radioactive sample and capital M be the mass after time small t ताले यारो भी सेही भला इक्वेशन आसीबो m equal to m0 e to the power minus lambda t हला so Rutherford and Soddy actually studied quantitatively the rate decay of some of the elements like thorium okay and the rate recovery of the thorium activity okay so the curve for the thorium was exponential in nature and the activity कोन एटा को हमें देखिबा या विषय रे activity could be expressed as a function of time by equation okay अच्छा ताले ए जो activity याकू हमें equation रे फ्रेम कला a for activity as a function of time should be same format रे a0 e to the power minus lambda t okay a0 हेगला initial activity of thorium and at हेगला activity suppose after time small t और lambda तो हमें जानिला एटा होची decay constant ताले the recovery curve for the thorium is given by the equation a equal to a0 recovery जेबळे हमरो थोरियम रो होची तार उल्टा हे जबो सो a0 1 minus of exponential of minus lambda t ओके सो एबे ए दुईटा जाको कर्व थोरियम रो हमें यदि पुट करिबा ओके सो देखो this is the curve which is showing us the decay and this curve is showing us the recovery okay so similarly the decay and recovery for ux and u actually एठी थोरियम x आउ थोरियम निया जाईची माने दुईटा अलगा अलगा एठी हमें कहि परिबा यारो आइसोटोप अछि ओके सो ux हला गोटे आइसोटोप यूरेनियम रो u हला आ गोटे आइसोटोप मने करा जाओ ओके ताले यार भी सेम ही प्लॉट आछी देखो ओके दिस इज द प्लॉट रिकवरी यूरेनियम रो आटा हला ux which is the decay okay where we have plotted the activity against the time right अच्छा
তাহলে from these curves we can see these two are very similar in case of either thorium or uranium, except that the time scale is different. Time scale টা অলগা হব, curve ର nature টা same ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ half life ପୁଣି କ'ଣ, ଏଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। half life of uranium x is more than the half life of thorium x। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା जो डीके कांस्टेंट आमे बाहर कला रेडियोएक्टिव डीके लॉ जोटा कि dn by dt इक्वल टू माइनस लैम्बडा n ताकू सॉल्व करले लैम्बडा रो वैल्यू आमे एतिकी पाई परिबा। ओके, सो हियर द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस याको एबे आमे डिफाइन करि परिबा फ्रॉम दिस लॉ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, सो आमर रिलेशन थिला n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा t। मने करा जाऊ आमे एठी t जगह रे इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा माने रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा आमे पुट कला, ताहले n इक्वल टू एबे जदी आमे कैलकुलेट करिबा it will be equal to n0 by e। okay, so this is giving us an important relation, hence from this equation the radioactive decay constant यार गोटे alternate definition पाइला of a radioactive substance may also be defined as the reciprocal of the time during which the number of atoms of the radioactive substance decreases to 1 by e of their number which are present initially। starting रे जहाँ थिला that is n0 ताकू आमे एबे जदी देखिबा आफ्टर केते टाइम n0 बाय e हिजबो। ओके, सो सेथुर आमे मध्य ए डीके कांस्टेंट रो गोटे अल्टरनेटिव डेफिनेशन पाई परिबा। ओके, एबे आसीबा जो एक्टिविटी कहउतला कोन एक्चुअली एक्टिविटी जे कोनसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रो आमे जदी डिफाइन करबा इट इज द रेट एट व्हिच द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स आर डिसइंटीग्रेटिंग इन द सैंपल। सो जदी गोटे रेडियोएक्टिव सैंपल नेला व्हिच इज कंटेनिंग सपोज n number of atoms at any time small t, then its activity at time t is given by this relation a equal to minus dn by dt। it again minus symbol एथिपाई लागुची because activity is decreasing with increase of time। okay, तेणु करी minus symbol। okay, now as per the law of radioactivity dn by dt तो आमे जानिछु minus lambda n। so activity रो value केते आसिला minus lambda n। and now n रो value जदि एबे हमें put करिबा then we are getting lambda n0 e to the power minus lambda t, and let us say lambda n0 equal to a0, then we are getting a relation like this। okay, which is quite similar to the relation of the number of atoms which are decaying। so it a0 hela activity of the sample which is at initial time t equal to 0, right? now following are the units of activity। it is very important। गोटे है क्यूरी, मेरी क्यूरी को ना यूनिट आसी सर्ट फॉर्म रे सी आई लिखा जाए which is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second। okay, अच्छा, आ गोटे है सिमिलरली मिली क्यूरी माने मिली रो एकक जदि कहबो 10 to the power minus 3, then माइक्रो क्यूरी माने 10 to the power minus 6 of curie। okay, so it is mci mu ci। तापरे another unit होची रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड equal to 10 to the power 6 disintegration per second। similarly एथिरु मिली रदरफोर्ड और माइक्रो रदरफोर्ड मध्ये आसीबो that is 10 to the power minus 3 बा 10 to the power minus 6 respectively multiply करिवो। ओके, अच्छा, रिलेशनशिप कोन क्यूरी और रदरफोर्ड भितरे रिलेशनशिप हला देखो 1 क्यूरी equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second। so it is 10 to the power 10 रो हमें 10 to the power 6 को जदी काटी देला ताले we are getting 1 curie equal to 3.7 into 10 to the power 4 Rutherford। so which is the required relation between the Curie and Rutherford unit of activity। okay, Thank you.